Very good morning to all of you. As we are discussing chapter planning and sustainable development in Indian context of our geography book, India, People and Economy. So today we are going to start our new topic, that is a very case study of Indira Gandhi Canal Command Area. Indira Gandhi Canal Command Area. It is a case study of sustainable development. So this project, who started this project, so it was launched on 31st March 1958, and it was conceived by Kamar Sen, and Kamar Sen belonged to Bikaner. So from where this canal, this is a canal, so canal is ओरिजिनेटेड फ्रॉम मतलब कैनाल कैसे बनाएंगे, तो रिवर पे डैम बना के उसके बाद में कैनाल्स बनाते हैं. So from where it originates, so this canal is originates at Harike Barrage in Punjab state and goes parallel to the Pakistan border to an average distance of 40 kilometers. So this canal originates at Harike Barrage and border to an average distance of 40 kilometers in Thar Desert and Marustili of Rajasthan. So in this picture, you can see, this is the picture of western part of Rajasthan. You can see the international border. This is the international border of India with Pakistan. And you can see that this Indira Gandhi Canal is going parallel to the Pakistan border at an average distance of 40 kilometers in Thar Desert. So this is the ये जो distance है, that is distance between the canal and international boundary. The average distance is 40 kilometer. कहीं मान लीजिए नजदीक हो सकती है, कहीं मान लीजिए थोड़ी सी दूर हो सकती है. And this part of Rajasthan is Thar Desert. It is Marusthali. Marusthali means the area of arid soil. Marusthali means the area of arid soil. Maru, Thar, that is Thar Desert of Rajasthan. You can see this canal is flowing in the district of Ganganagar, then Bikaner, then Jaisalmer, and then यहाँ तक. वैसे तो main canal, if I'm talking about the main canal, then it flows in only these district. But अब इस canal में से भी कोई बहुत सारी subsidiary canals जो हैं वो निकल के और आसपास के दूसरे areas को भी क्या दे रही है, वाटर सप्लाई कर रही है. जैसे देखिए चूरू is also benefited from this canal. Badmer is also, this part of Badmer is getting benefit from this canal. Now let's talk about the total planned length of the system. The total planned length of the system, if I'm talking about the total length of this canal, then it is 9,060 kilometers. 9,060 kilometers is the total planned length of this Indira Gandhi Canal project, and it will fulfill the irrigation needs of total culturable command area. It will supply water to total culturable command area. Culturable means cultivable. ऐसी land जिसको क्या कर सकते हैं, cultivate कर सकते हैं, जिसमें agriculture कर सकते हैं. This land is culturable command area and it will provide water to 19.63 lakh hectare land. 19.63 lakh hectare land. So this canal is near about 9,060 kilometers in length, and it will provide irrigation facility or water, drinking water, to 19.63 lakh hectare land, that is culturable, total culturable command area. Here culturable means cultivable. Culturable means cultivable. Yes, culturable means here cultivable. Command area means directive land. Directive land जिस area के अंदर ये क्या देगी, water supply करेगी. That is command area. So out of the total command area, about 70% was envisaged to be irrigated by flow system and the rest by lift system.
So what do you understand by flow system and lift system? There is a difference between flow system and lift system. And what is the difference between flow system and lift system? So flow irrigation system, two types of irrigation systems are there, flow irrigation system and lift irrigation system. देखिए, अब जो लैंड जो है उसका स्लोप सभी जगह सेम नहीं है, कहीं कहीं इस कैनाल के अंदर ऐसी लैंड आएगी जो वापस लैंड का जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो थोड़ा सा ऊंचा है, फिर वापस लैंड सरफेस की हाइट नीचे आ गई, फिर ऊपर आ गई। तो कैनाल किस तरह से चलेगी? तो कैनाल पे वाटर को लिफ्ट करना पड़ता है, उसको लिफ्ट करके आगे सप्लाई देनी पड़ती है, दैट इज लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। और जिसमें ऐसी लिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती है, दैट इज फ्लो इरिगेशन सिस्टम। सो यस, तो जितनी भी लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम की जो कैनाल है वो आपकी कैनाल, मेन कैनाल से ही क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ दिस सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनाल, व्हाइल ऑल द कैनाल्स ऑन द राइट बैंक ऑफ मेन कैनाल्स आर फ्लो चैनल्स। तो आपके कैनाल का जो है लेफ्ट हैंड साइड वाली जितनी भी जो सब कैनल्स निकली है, दैट आर लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से फ्लो करेंगी, एंड देन राइट हैंड साइड जो है वो फ्लो चैनल्स है। आउट ऑफ द यस, आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अप टू 70%, ये हमारे हमने डिस्कस कर दिया। उसके बाद में देखिए कि इस कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, इस कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टेजेस के अंदर हुआ, ऐसा नहीं है पहले पूरी की पूरी कंप्लीट कैनाल बन गई। देयर आर सम स्टेजेस। सो दिस कैनाल सिस्टम हैज बीन कैरिड आउट थ्रू टू स्टेजेस, दैट इज स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड, दैट इज स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। सो स्टेज फर्स्ट जो है, स्टेज फर्स्ट, तो इन फर्स्ट स्टेज इट कवर्ड द कमांड एरिया ऑफ what? Ganganagar, Hanumangarh and northern part of Bikaner district. So these three areas got benefit from in the stage first. Stage first के अंदर आपके इन एरियाज ने बेनिफिट्स लिया है। नेक्स्ट जो स्टेज सेकंड में जो है, जो बाद में कंस्ट्रक्ट हुआ, जैसे जैसे ये डेवलप होते गई वैसे वैसे ये कंस्ट्रक्ट होते गई। तो स्टेज फर्स्ट जो है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, and it has gently undulating topography and its cultivable command area is 5.53 lakh hectare. So student, listen to me very carefully. Undulating topography means rough topography. Undulating topography means rough landscape, because as we all know that बीकानेर में क्या है, sand dunes भी है। गंगानगर में ठीक है, अब प्लेन एरिया हो गया है, काफी कुछ वहां पे एग्रीकल्चर डेवलप हो गया है। बीकानेर के अंदर सैंड ड्यून्स में, दैट मींस इट इज अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी और वी कैन से रफ लैंडस्केप और रफ टेरेन। The total cultivable command area covered in the first stage is 5.53 lakh hectares of land. Cultivable we already discussed, that is cultivable. तो cultivable agricultural land जो है इसके अंदर जो कवर किया गया था, that is 5.53 lakh hectares. टोटल कितना था? 19.63 lakh hectares टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया है इस कैनाल का, एंड आउट ऑफ विच स्टेज फर्स्ट में जो कवर हुआ था दैट इज 5.53 लाख हेक्टेयर लैंड। Now let's discuss about the stage second command area. Stage second command area, और कमांड यहाँ पे कंप्यूटर कमांड है, डायरेक्टिव एक प्रकार की, जो जहां पे सेकंड एरिया में जहां डेवलप हुआ है, दैट इज कमांड एरिया, where this canal provide facility of irrigation of drinking water too, that is command area. The area that is covered under this project, that is command area. So stage second includes the rest of Bikaner, because in stage first only the northern part of Bikaner covered, the rest of the Bikaner covered in the stage second. Jaisalmer covered in stage second, Badmer, Jodhpur, Nagaur and Churu district, and that cover near about the cultivable command area of 14.10 lakh hectare. So in the second stage, this canal, Indira Gandhi Canal, covered the cultivable command area of 14.10 lakh hectare of land in second stage. So it comprises desert land dotted with shifting sand dunes and temperature soaring to 50 degrees Celsius in summer.
As we all know that in Jaisalmer, especially in Jaisalmer, Jaisalmer is known by its sand dunes and its hot climatic conditions. So in Jaisalmer, where the mercury sometimes reaches 50 degrees Celsius temperature, this second stage of this Indira Gandhi Canal project covers that sand dune area, that area which getting the temperature near about 50 degrees Celsius in summer. So in the lift canal, we discussed about the lift canal. We discussed about the lift canal. That lift canal कौन सा है जहां पे आगे स्लोप्स आ जाते हैं, लैंड हाईलैंड आ जाती है, वहां पे क्या करना पड़ता है, वाटर को लिफ्ट करके फिर आगे फ्लो करवाया जाता है. दैट इज लिफ्ट कैनाल. द वाटर इज लिफ्टेड अप. The water is lifted up to make it to flow against the slope of land. तो देखिए जो वाटर जो है उसको लिफ्ट करके फिर आगे क्या करना पड़ता है, फ्लो करवाना पड़ता है. सो ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम originate at the left bank of the main channel. So these all are originate at the left bank of main channel, while all the canals on the right bank of the main channels are flow channel, जिनमें लिफ्ट की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वहां पे जो आगे लैंड है वो यहाँ तो इक्वल है, स्लोप उसका इक्वल ही है, या फिर वो क्या डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं है. लेकिन जहां फ्लो में आगे हाईलैंड आ जाती है तो वहां पे पानी के फ्लो को फिर हमें लिफ्ट करके, जैसे मोटर से लिफ्ट करके उसे फ्लो करवाना पड़ता है. तो ऑल द कैनाल्स ऑन द राइट बैंक ऑफ मेन कैनाल्स आर फ्लो चैनल्स. Now, irrigation in the stage first command area. So, this was started in early 1960s. As we discussed that this canal project was launched on 31st March 1958. 31st March 1958 को ये लॉन्च किया था. तो उसमें जो आपका इरिगेशन सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हो गया था वो नियर अबाउट 1960s के ड्यूरिंग हो गया था. इन सेकंड स्टेज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड स्टेज, इट स्टार्टेड नियर अबाउट मिड 1980s. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो देखिए इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है. फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर दैट हु कंसीव्ड, हु स्टार्टेड, हु फ्रेम्ड दिस प्रोजेक्ट. सो इट वाज फ्रेम्ड बाय कंवर सेन इन 1948. Thereafter, who launched this project? This project was launched on this project was launched on 31st March 1958. From where this canal start? So it started in Harike Barrage in Punjab. So, and this thing also you have to write down that it flows parallel to the international border of India with Pakistan, and at an average distance of 40 kilometers, it flows in western part of Rajasthan in the Thar desert, that is Marustali, in the district. The main canals flows in the district of Ganganagar, बीकानेर एंड जैसलमेर. तो ये पूरा आपको लिखना है. देयर आफ्टर आपको ध्यान होना चाहिए टोटल प्लांट लेंथ कितनी है इस कैनाल की, दैट इज 9060 किलोमीटर. आफ्टर दैट यू मस्ट नो, यू हैव टू राइट डाउन द टोटल कल्टिवेबल command area, that is 19.63. Thereafter you have to discuss the stages. There are two stages in the Indira Gandhi Canal project, and the stage first that covers Ganganagar and Hanumangarh and northern part of Bikaner. It started near about 1960s. It started near about 1960s, and द स्टेज सेकंड जो है वो आपकी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है. एंड इट इंट्रोड्यूस इरिगेशन नियर अबाउट मिड 1980s. तो टाइम पीरियड दोनों स्टेजेस के आपको ध्यान होने चाहिए. आफ्टर दैट टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया जिसको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज कल्चरेबल और कल्टीवेबल कमांड एरिया. दैट कल्चरेबल और कल्टीवेबल कमांड एरिया ऑफ स्टेज फर्स्ट इज 5.53 lakh hectare and the stage second is 14.10 lakh hectare. So you must know about this total command area of different stages. Now
in stage first, ये हमारा टाइम के रिगार्डिंग हो ही गया. The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society. तो एनवायरमेंट को पूरी तरह से चेंज कैसे कर दिया, क्योंकि जो थार डेजर्ट का जो बिल्कुल थॉर्नी बुशेस हुआ करती थी, जो थार डेजर्टिक वेजिटेशन होता था, वो किससे रिप्लेस हो गया, वहां पे ग्रीनरी से रिप्लेस हो गया. ड्यू टू दिस कैनाल दिस एरिया develop as a green belt. That is the effect of, that is the influence of the canal on ecology, on environment. Next one, that is economy. So this canal supports lots of farmers in developing their economy. How? Because it provide irrigation facility, and farmers now able to cultivate three crops during a year, that is kharif, zaid and rabi. तो farmers की economy को किसने develop किया? IGNP, that is इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, या IGNP जो है इंदिरा गांधी, IGCP कर लीजिए, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसने क्या किया? डेवलप किया. नेक्स्ट, सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कैसे किया? तो जो एरियाज इनहैबिटेड नहीं थे, दोस एरियाज आर नॉट, जहां लोग नहीं रहते थे, अब वहां पे लोगों ने सोसाइटीज को क्या किया है? डेवलप किया है. बिकॉज ड्यू टू the availability of irrigation, due to development of agriculture in these areas, so it has influenced the environment problems of the region both positively and negatively. We yesterday also discussed about the positive impact of Indira Gandhi Canal project and negative impact of the Indira Gandhi कैनाल प्रोजेक्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था. तो पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर तो देखिए, इसने बहुत सारे एरिया को, इट प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी to a large area, that is command area and cultivable command area जो है, इसमें बहुत बड़ा जो एरिया है उसको सपोर्ट कर रहा है. that is a positive effect. It also replaced, इसने क्या किया, जहां जिन एरियाज में केवल और केवल मिलेट्स उगाए जाते थे, कोर्स क्रॉप्स उगाई जाती थी, कोर्स ग्रेन्स उगाए जाते थे, उसको रिप्लेस करके वहां पे पल्सेस है, वहां पे ऐसी क्रॉप्स जिनकी मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो फूड ग्रेन्स की जगह दूसरी क्रॉप्स ने उनकी जगह ली. तो दैट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट. एंड इसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी डेवलप किया. दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस कैनाल. Okay, so it has influenced environmental condition as positive as well as negative. Where negative impact kya hai? We are going to discuss the availability of soil moisture for a longer period of time, and various afforestation and pasture development program under command area development. CAD here stands for command area development, have resulted in greening the land. So greening the land is the positive impact of the Indira Gandhi Canal project. Okay, yes, this has also helped in reducing wind erosion and siltation of canal system. Students, in 10th class we discussed about the erosion of the soil. So erosion of the soil due to weathering, and one of the weathering agent is wind. So wind erode the soil, but as we all know that planting trees, by increasing the area under plants and trees, ये क्या करती है, soil को अपनी roots में bind कर लेती है, और जब roots से bind कर लेती है तो wind erosion जो होता है वो क्या होता है, कम होता है. wind से soil erosion कम होता है, क्योंकि रूट्स को किसने बाइंड कर लिया, ट्रीज ने. सो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनाल इन दिस एरिया, due to the settling of green belts in this area, जो अपना soil erosion जो होता था वो अब क्या होने लग गया, कम होने लग गया, कम होने लग गया. Yes, next one, that is but the intensive irrigation.
and excessive use of water has led to the emergence of twin environmental problem of waterlogging and soil salinity. So this is the negative impact of the Indira Gandhi Canal project. The first one, the problem of waterlogging. The second one, that is the problem of soil salinity. So these two problems are the negative effect of the Indira Gandhi Canal project. What do you understand by water logging? Water logging का मतलब हमारे लिए क्या है? तो water logging मतलब क्या है? The land which is soaked with water. अब क्या है कि पानी जो है बहुत ज्यादा ओवर इरिगेशन किया, इंटेंसिव इरिगेशन, दैट इज ओवर इरिगेशन करते गए। मैं कहता हूँ, आपको ही बात करता हूँ, अगर मान लीजिए आपके घर पे आपने प्लांट लगा रखा है और ठीक है, हम देखते हैं कि हम जो प्लांट्स को पॉट्स में लगाते हैं, पॉट के नीचे एक होल होता है। वो क्यों होता है? कि एक्सेसिव वाटर क्या करे, उस होल से ड्रेन हो जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ दैट होल, दैट इज द मोटिव ऑफ दैट होल। अब इरिगेशन अगर ओवर होगा तो नीचे कुछ रॉक्स हैं जो पानी को परकोलेट करने देते, कुछ रॉक्स हैं जो नहीं करने देते। जो नहीं रॉक्स परकोलेट होने देगी वाटर को, तो वाटर कहाँ जमा होने लग जाएगा? आपको सी पे, लैंड सरफेस पे क्या जमा होने लग जाएगा। जब वो लैंड सरफेस पे ही कलेक्ट होने लग जाएगा और अंदर जो है एब्सॉर्ब नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग से फिर क्या होगा? जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, उनको एयर चाहिए होती है। तो इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ एयर। ये एयर के फ्लो को स्टॉप कर देगा, तो अल्टीमेटली उस सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर देगा। इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल। Degrade means decrease in the quality of soil. That is decrease in the quality of soil. So this is the problem of waterlogging, and waterlogging problem is related to the negative impact of the Indira Gandhi Canal project. Next one, that is soil salinity. Soil salinity means the presence of the content of soil in content of salt in this soil. It is measured in parts per thousand. Parts per thousand is the unit for the soil salinity. ओके, सो सॉइल सैलिनिटी जो है, सैलिनिटी हमने वाटर की पढ़ी थी, वाटर के अंदर कितना सॉल्ट का कंटेंट है, दैट इज वाटर सैलिनिटी, और उसको पार्ट्स पर थाउजेंड में मेजर करते हैं। सॉइल सैलिनिटी जो है कि पानी में सॉइल का सॉल्ट, सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। और सॉइल में जब सॉल्ट का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा तो फिर उसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। इट विल डिक्रीज द क्वालिटी बिकॉज प्लांट्स कांट डेवलप इन सॉल्टी सॉइल। Plants can't develop in the salty soil, so that is also a negative impact of the Indira Gandhi Canal project. So ये दो जो टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए इन दो टर्मिनोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट वन, introduction of canal irrigation has brought about a perceptible transformation in the agriculture economy of the region. What do you understand by perceptible? Perceptible, which means easily observed, which we can easily observe. So we can easily observe the transformation of the agriculture from a backward agriculture system to a modern agricultural system, from subsistence agriculture system to a कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल सिस्टम। पहले का जो एग्रीकल्चर जिस एरिया में होता था वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था, वहां कोई सरप्लस नहीं था, वहां पे सबका सब जो है फार्मर की फैमिली कंज्यूम कर लेते। लेकिन अब जो एग्रीकल्चर हो रहा है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इंदिरा गांधी कैनाल, this irrigation is commercial agriculture farming. This agriculture farming is commercial agriculture farming, and here there is enough surplus to sell in the market, and it improve the condition, the economy of the farmers. Farmers की economy को improve किया है totally इसने। So soil moisture has been limiting factor in successful growing of crops in this area. और अगर मान लीजिए soil जो है अगर proper नहीं है उसका moisture, तो फिर वो आपके crops को ज्यादा अच्छे से डेवलप नहीं होने देगी, सपोर्ट नहीं करेगी। तो टू प्रॉब्लम व्हिच वी डिस्कस, द वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, इट विल अफेक्ट द क्रॉप्स, इट विल अफेक्ट द क्रॉप। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरिगेशन, स्प्रेड ऑफ कैनाल
irrigation has led to increase in cultivated area and intensity of cropping. So that is the positive impact of this IGLP, that it will increase the cultivated area. जो area पहले cultivation के अंदर में नहीं था, जो यूं ही पड़ा था, that is also covered in this agriculture due to this Indira Gandhi canal irrigation. Now, intensity of cropping. The traditional crops sown in the area, gram, bajra, jawar, have been replaced by wheat, cotton, groundnut and rice. तो पहले जो crops grown होती थी, जैसे gram करते थे, बाजरा करते थे, ज्वार. What are the reason responsible for growing these crops? Because these all crops needs less water to ग्रो. इन सभी को कम पानी चाहिए था और इस एरिया के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द मॉनसून एंड मॉनसून आल्सो नॉट गुड इन दिस एरिया. दैट्स व्हाई पीपल ऑफ दिस एरिया, द फार्मर्स ऑफ दिस एरिया ग्रो gram, bajra, jawar. But after the introduction of the Indira Gandhi Canal project, these crops, these traditional crops, are replaced by wheat, cotton, groundnut, and rice, which having very good value in the नेशनल मार्केट. जो नेशनल मार्केट है उसके अंदर इन सारी क्रॉप्स की जो कॉस्टिंग है, वैल्यू है, दैट इज better than these traditional crops. So this is the result of the intensive irrigation, and this all is possible due to the intensive irrigation or the irrigation facility given by Indira Gandhi Canal. This intensive irrigation, no doubt, initially has led to tremendous increase in agriculture and livestock productivity. तो ये जो negative impact है, the impact of water logging, the impact of soil salinity, ये शुरुआत में initially नहीं आए थे, ये बाद में आए थे. तो तब तक जो है एग्रीकल्चर भी अच्छे से डेवलप हुआ और लाइव स्टॉक भी अच्छे से डेवलप हुआ. बिकॉज लाइव स्टॉक एक्चुअल वॉट लाइव स्टॉक नीड्स वॉट लाइव स्टॉक नीड्स फूड, और फूड अवेलेबिलिटी वहां पे क्या हो गई, ह्यूमंस एज वेल एज लाइव स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा. सो दिस हैज आल्सो कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, and thus on the long run it hampers the sustainability of agriculture. तो लॉन्ग रन की अगर बात करें तो इसने एग्रीकल्चर को सस्टेन होने के लिए इसने क्या है, एक वे दे दिया कि हाँ एग्रीकल्चर जो है वो क्या हो जाएगा, इस ड्यू टू दिस IGNP, ड्यू टू दिस इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है, इससे ये सस्टेन्ड रहेगा. यस. नाउ मेजर्स फॉर द प्रमोशन, students, measures for the promotion of sustainable development, which we will discuss tomorrow. So yes.